Good evening, students. Unit 4 start करिवा. Unit 4 रे तमर अछि ICT enrich हेथिबो classroom learning रे कोन कोन ICT केमते दरकार होछि. हां तो start करिवा. Good evening all of you. Screen share करछि. हां visible होछि कि नै खाली कहि दियो मते टिके. Good evening समस्तंको पिला माने मोर देखो जी हम यूनिट 4 टा स्टार्ट करिवा. हां देखो विजिबल हला मेसेज करो फटाफट. ओके हाँ देखो. देखो यूनिट 4 तमर अछि आईसीटी इनरिच्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. हां तुम जो आईसीटी यूज करूछो. हां आईसीटी यूज करिकी तमे लाभान्वित केमिति होउछो. तमर लर्निंग एक्सपीरियंस केमिति होउछि आईसीटी द्वारा. ये कोन करूछि पाठ को आकर्षणीय करूछि. हां अट्रैक्टिव करूछि. बही खाता धरिके पढ़िबा अपेक्षा जदि प्रोजेक्टर रे तमे पढुछो त माने कोन खुशी होउछो इंटरेस्टिंग लागुछि तुमको जिंसटा. तो ये कौन ना गोटे अट्रैक्टिव वे रे तुमको पाठटा पढ़ा होउछि. सो तार एप्लीकेशन कोन कोन अछि हमें देखिबा. जो डिजिटल टूल्स व्यवहार करूछो टेक्नोलॉजी व्यवहार करूछो कोन फॉर एनहांसिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस तमर जो एनहांस होउछि तारो केमिति सेटा होउछि ताको हमें एबे देखिबा. हैला जो स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग होउछि ऑडियो विजुअल लर्निंग होउछि ऑनलाइन विभिन्न ऑनलाइन क्लास होउछि ई लर्निंग रो पढुछो ई बुक्स रो पढुछो इंटरेक्शन भलो ही पारुछि. ई सब द्वारा केमिति तमे लाभान्वित होउछो देखिबा. The applications of ICT for enriching classroom experience. One of the major changes in modern society education is a shift from teaching to learning. हाँ teaching रो जानिबठो तमे शिक्षणटा बहुत important. तो teaching to learning important अछि. हाँ एटा शिफ्ट हे छै modern education ने आगो तमे सिखुछो then पढौछो पिलांगु. हाँ role of teacher now is as a facilitator and is to assist the students to become good learners. हमरो लक्ष्य होछि तमरे जेमती भलो भलो गोटे गोटे गुड लर्नर हे परिबो. दिस शिफ्ट इन एजुकेशन डिमांड्स आईसीटी इंटीग्रेशन विथ पेडागोजी. पेडागोजी सहित इंटीग्रेशन आईसीटी मध्ये दरकार होछि. द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग लर्निंग प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन व्हाट तमर टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स which supports the integration of technological infrastructure and system into the educational environment. Then asila pedagogical part जोतरे की support kala say the integration of ICT material and programs in term of social constructivist learning principle. Social constructivist के वाइगर्स की ସେମାନେ କଣ pedagogy ପଢିଛନ୍ତି ଆମକୁ pedagogy ଶିଖେଇଛନ୍ତି pedagogy ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପଢୁଛେ. ତ ICT ରେ pedagogy ମଧ୍ୟ enrich ହେଲା ମାନେ କଣ integrate ହେଲା. ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ डायग्राम ଦେଖିବା enriched classroom experience କଣ କଣ ସବୁ ତମର ଲାଭାନ୍विତ ହଉଛି confidence ବଢୁଛି ओल्टा ओल्टा अच्छी टिके देखिए ट्राई करो. कोलाबोरेटिव लर्निंग मिलित भाव शिक्षण हो पारुछि. मल्टी मोडल कम्युनिकेशन तमरो कम्युनिकेशन हो पारुछि समस्त सहित. देन डायग्नोसिस भलो भाबरे जिंसटा डायग्नोस हो पारुछि. दोष दुर्बलता तमरो चिन्हट हो पारुछि. या द्वारा अति शीघ्र भलो भाबरे तमे कोन करछु पुनी रेमेडियल क्लास रे जॉइन करिकि भलो भाबरे पढी पारुछु. हायर सैटिस्फैक्शन हायर मिलुछि. प्रमोटिंग एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट प्रमोट करि पारुछ. इंटरेस्टिंग एटा गोटे कौतूहल तम भितर जागृत होची. इन्फॉर्मेशन रिच एनवायरनमेंट एते ना तमे बहुत इन्फॉर्मेशन पाई पारुछ या द्वारा. देन असला पावरफुल इंस्ट्रक्शन पावरफुल अछि. यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करूची. वाइड रीच विथ हाई स्पीड हैला डिस्टेंस ए सब जेते डिस्टेंस थिले मध्ये पाठटा पढी पारुछ. एबे तम माने कोठी कोठी सब पिला माने अछ समस्त मो पाखरु पढी पारुछ. तो जेते डिस्टेंस को भी एटा कवर करि पारुछ. डिस्टेंस को ये उड़े दे पारुछ सब बिना बाधा बिना ये तमे पाठ पढी पारलो. लोअर यूनिट कॉस्ट एते कॉस्ट नहीं एटा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव. इंटरैक्टिव बहुत भलो भाबे इंटरेक्शन करि पारलो. इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग
हाँ मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस ये सब जिनिस आईसीटी द्वारा ही संभव हो पारुची। एडवांटेजेस कौन अच्छी पिले आईसीटी रो इन एजुकेशन रे आईसीटी रो लाभ कौन तमरे सब माने उपकार कौन अच्छी एलिमिनेट्स बैरियर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट पिला आउ टीचर भितरे गोटे बैरियर थिला पिला डरुथिला पाठ बुझु नथिला बहिरु बुझी पार नथिला एबे सेटा बहुत इजी हे गलानी एलिमिनेटर जियोग्राफिकल बैरियर फॉर स्टूडेंट्स इन लर्निंग जियोग्राफिकल बैरियर मध्ये एटा हटै देला तमे कोठी कोठी थाई कि भी को जिल्ला रे थाई मध्ये इवन ओडिसा बाहर भी जदि भी किए थिबे से माने भी पढ़ी परले allows use of advanced method in education modernization हे गला जब advanced method रे teaching दिया हला increase the international dimension of education services ICT can also be used for non formal education such as health campaigns and campaigns for illiteracy ହେଲା ए सब रे मध्य ये कोन कला आईसीटी तमरो यूजफुल हे परला affect the spread of education पूरा माने दिगंत विस्तार हे गला enable the collaborative developmental skill improve the quality of learning ମଧ୍ୟ बढ़िला शिक्षण रो गुणात्मक मान वृद्धि पाइला एबे हम देखिबा approaches for integrating ICT in teaching learning processes approach कौन अच्छी आईसीटी रो है ना modernization of education has become an essential aspect of knowledge modernization ହେଇଛି the teaching learning process has been upgraded with the aid of computers in many ways from traditional to modern system ट्रेडिशनल को देखिकी मॉडर्न पर्यंत केते कोन तमर प्रोसेस सब उन्नति हेलाने कंप्यूटर रो The technological advancements in imparting learning would bring interest, curiosity, and enhance imagination. या द्वारा कौन पिला मनंग भितर कौतूहल जागृत होची क्यूरियोसिटी जानिबार शक्ति बढ़ुची पिलांग भितर इमेजिनेशन पावर गोटे बढ़ुची problem solving attitude बढ़ुची and aggressive thinking capacity which will be important for research and development for younger generation young generation ପାଇଁ ये बहुत important बहुत facilities दउची हां तो approaches कौन अछि integrating ICT ପାଇଁ approaches for integrating ICT skills development approach ICT कौशल केमती पढ़िला importance is given to provide training in the use of ICT. Students and teachers are expected to be able to use ICT for daily activities. In this, teachers develop knowledge about hardware, software, and their use in educational teaching learning process. इनको याद रखो टीचर मैंने डेवलप करूछन तांको भितरे हार्डवेयर रो हो सॉफ्टवेयर हो विभिन्न स्किल हो ये सब डेवलप होची तांको भितरे ICT pedagogy approach कौन पिले in this emphasis is given to integrate ICT skill in respective subject रे ICT रो skill को बढ़ा गला ICT बोर्ड पिले पढ़िले जानिले ICT is used by teachers to prepare lesson plan and activities which foster and learning outcome ये जो learning outcome को ये बढ़ेला कौन ପାଇଁ lesson plan कलो lesson plan ହେଲା कि आदर किछ TLM ହେଲା teaching learning material ये सब कौन लर्निंग आउटकम्स बढ़िला सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रे तमरे अप्रोच केमती हला इन दिस अप्रोच आईसीटी इज यूज्ड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया here teachers give an exposure of new and innovative ways of learning to the students बलदिया मेथड रे के गलेनी बही कथा धरी खाली पढ़िलेनी इनोवेटिव वे रे पिला माने पढ़िले हां प्रोजेक्टर रे पढ़िले पावर पॉइंट रे पढ़िले तो या द्वारा कौन हैला ना पिला मानकर specific subject prati skill बढ़िला emphasis is also given to practical understanding for concept by ICT tools द्वारा मध्ये practical knowledge पिलांकर बढ़िला by this approach ICT is not an extra but integral part of learning across wide range of curricula तो विभिन्न रेंज रे तमरा आईसीटी केवल एमती एक्स्ट्रा नुह बट एटा बहुत माने तमरा इंटीग्रल पार्ट हे गला लर्निंग रो across all माने सब जगह रे हां ऑल रेंज ऑफ करिकुला देन असला प्रैक्टिस ड्रिवन अप्रोच प्रैक्टिस केमदी ड्रिवन हबो प्रैक्टिस केमदी बढ़िबो दिस अप्रोच एम्फसिस ऑन प्रोवाइडिंग आईसीटी ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रैक्टिस माने कोन प्रैक्टिस करू माने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिवो लैब रे प्रैक्टिस करिवो कंप्यूटर लैब रे प्रैक्टिस करिवो
Focus is given on developing lessons and assignments. लेसन हो असाइनमेंट हो से सब तुम फोकस दिया by this approach students access the facilities available at the school and effectively use their own skill ନିଜର କୌଶଳତା ବଢିଲା या ଦ୍ୱାରା own skill ବଢିଲା applications of multimedia in classroom situations multimedia ମାନେ କଣ different medium use କରିକି ତମେ କଣ ପାଠଟା ପଢିଲ classroom situation ରେ ତାର କଣ use ହେଲା फायदा କଣ multimedia is a presentation of information that incorporates multiple media multi ମାନେ many ତ many media use କଲ multiple media use କଲ such as କଣ କଣ text through ରେ ହଉ audio through ରେ ହଉ graphics through ରେ ହଉ animation through ରେ ହଉ video ରେ ହଉ ଏଇ ସବୁ use କରିକି ତମେ ମାନେ ପାଠଟାକୁ ପଢା ଗଲା ତମକୁ classroom ରେ The term multimedia was coined by singer and artist Bob Goldstein. ବବ୍ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗର ଏଇ ଜିନିଷ ଟର୍ମ ଟାକୁ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ହଁ ତ ଟର୍ମ ଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କି ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟେନ୍ Modern classroom are different from traditional classroom as they are student centric, interactive and teachers are facilitator. ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଖାଲି ବାସ୍ ମାନେ ସର୍ ଆସିକି ପଢଉଥିଲେ ପିଲା ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ ଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ ବଟ୍ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲା ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଲାସରୁମ ଟା ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହଉଛି ତ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ପଚାରୁଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳୁଛି ସର୍ ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ ତମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିପାରୁଛ ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଭଳିଆ ତମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ୟୁର ଗାଇଡ friend and philosopher. To create this difference, new technology has played a big part as it provides better resources, references, and making it more interactive and brings new layer to the educational process. ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଏଇ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତମେ ପଢିଲ ତମେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ବେଶୀ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲ ଆଉ ତମର ସେଟା ମନେ ବି ରହିଲା ଶୀଘ୍ର types of multimedia କଣ talking books digital texts can be read aloud by recorded human or synthetic voice text to speed program ଏସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଲା ତାକୁ ତମେ ପଢିଲ CD-ROM storybooks these are digital books having audio text with animations illustrations speech and sound it engages learners and incorporates valuable literacy support animation ବିଭିନ୍ନ ରହିଲା ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ବି ତମେ ପଢି ପାରିଲ hypermedia it refers to multimedia linkage with text audio graphics animation and video hyperlinks it enriches the range of instructional support such as vocabulary translations explanatory notes so ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା hypermedia ରେ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲା ଟେକ୍ସଟ ବି ରହିଲା ଅଡିଓ ବି ରହିଲା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବି ରହିଲା ତୁମର ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ୍ସ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ତମେ କଣ କଲ ନା ବିଭିନ୍ନ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ହଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହଉ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲ computer simulations କଣ it is computer generated versions of real world object like processing of elections and in education helps in increasing content knowledge ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମର content ର knowledge ବଢିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ versions କୁ ଜାଣି ପାରିଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ education ରେ ତମକୁ help କଲା characteristics ର କଣ ପିଲେ multimedia has four basic characteristics କଣ କଣ number one multimedia should be controlled by computers ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା computer ହିଁ control କରିବ it is integrated to different software and hardware ଏଟା integrate ହବ ବିଭିନ୍ନ software କୁ and also hardware କୁ the information handle are represented digitally ନିହାତି ଭାବରେ computer ହଉଛି ମାନେ digital ହିଁ represent କରାଯିବ multimedia creates interactive presentation interaction ହଉଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ତ interactive presentation ପାଇଁ ଏଟା ଭଲ multimedia features କଣ ପିଲେ high processing power and retrieval of data ହଜିବନି data retrieve ହେଇକି ରହିବ ଆଉ processing power high ଥିବ multiple multimedia file system for different types of media large storage and memory for storing large data ବହୁତ ଗୁଡେ data ରହିପାରିବ ଏଠି network supports client server ହେଲା system ହେଲା distribution and interconnectivity software tools ରେ କଣ user friendly software tools for better engagement and understanding ତମର ଧାରଣର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଭଲ ହବା ପାଇଁ ତମର ବିଭିନ୍ନ understanding power ବଢିବା ପାଇଁ user friendly software ସବୁ tools ଗୁଡା କଣ educational benefit of multimedia ରେ
मीडिया जो आम यूज करुचे एजुकेशन ने कौन कौन बेनिफिट्स मिलुचे गोटे ला कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्रूव लर्निंग ये लर्निंग को इम्प्रूव करला फ्लेक्सिबल सब तुम करि परिबो मॉड्यूलर टाइप देन प्रैक्टिकलिटी यार रहिला कंसिस्टेंट रहिला स्ट्रक्चर्ड हैला टाइमली को तुम गोटे एंगेजिंग हैला या द्वारा तमर एंगेजमेंट बढ़िला एंगेज्ड हे रहिला applications of internet in education internet education कौन दरकार समस्या जानिଛ इंटरनेट बिना तुम पाठ पढ़ुन इंटरनेट दे इंटरनेट थिले ही तुम गोटे जिनस पढ़ुछ तुमको इंटरेस्टिंग लागुଛି तो इंटरनेट बिना तुम अधूरा हाँ तो एजुकेशन इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस which prepares individual to lead meaningful and dignified life by transmitting assimilating and डिसिफेरिंग नॉलेज एते कथा नहीं तमे सोशल प्रोसेस एजुकेशन गोटे जहा द्वारा कि तमे लाइफ टा तुमरा मीनिंगफुल होची द एजुकेशन सिस्टम हैज बेनिफिटेड फ्रॉम एडेप्टेशंस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन अडॉप्ट करी नहीं छे हमें एजुकेशन इंटरनेट को मैं अडॉप्ट करी सरलेनी इट हैज लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशनल टू एबे तुम मॉडर्न एजुकेशन में पढुछ तुमको आईसीटी तुमको इंटरनेट तुमको निहाती आवश्यक विथ यूज ऑफ इंटरनेट इट हैज मेड द मॉडर्न क्लासरूम मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ये कौन करूची तुमको बेसी एंगेजमेंट रे रखुची एंगेज हेक रहउची पूरा और इंटरेस्टिंग मध्य करि दउची स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स हैव इंस्टेंट एक्सेस टू वर्चुअली एंडलेस लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे इंफॉर्मेशन पाई परुचंती वर्चुअली सब आडू भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आईसीटी पे हमें पाई परुचे इंटरनेट हैज मेड द educators to share the latest updates on the content with the students very fast and effectively जहाँ भी जोठी जहाँ आमे न्यूज जानिले कि पढ़िले आज कौन हला संगे संग तुमको डाटा दे होची तो इन्फॉर्मेशन तुमको पास करी होची तो स्टूडेंट्स माने वेरी फास्टली और वेरी इफेक्टिवली ये सब जिंस जानि परछंती एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन कौन समस्या जानिछ easy access to information बहुत easily पाई परुछु internet provides large number of informations in seconds which have taken days in traditional mode of study teachers can also find latest development in their field and deliver it to their students जहाँ भी हम information पाउछु संगे संग तुम मन को पाखो को शेयर कर दोछु information तुमको दे दोछु तो easily internet स्टूडेंट तुम पाई पल्लो multimedia रे कौन दरकार हैला internet allows teacher and students to access multimedia content which is otherwise need special software students gain deeper perspective of the subject by videos pictures audio इने तुमको गोटे जिंस बुझे देबे तुम जति के बुझी परिबोनी जति गोटे वीडियो तुमको देखे देली कि एनिमेशन वीडियो किछि देखे देले तुम फटकी ना बुझी जिवो तो मल्टीमीडिया रे भी नेसेसिटी बहुत रहउची या द्वारा तो कम्युनिकेशंस मध्ये बढ़िला इंटरनेट अलाउ स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इजीली बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय ईमेल्स इंस्टेंट मैसेज एंड फाइल ट्रांसफर संगे संग व्हाट्सएप कर दोछ ना नहीं जहाँ जोटी दरकार पड़ुची तो कम्युनिकेशन पे भी इंपोर्टेंट ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एबे जहाँ चलची हम भितरे तो एजुकेटर्स पोस्ट देयर रिसर्च ऑन वेबसाइट्स ब्लॉग्स which are the immense helps to students and also conduct online classes करूछ तो माने बेनिफिट्स पाउछ जानुछ वर्क फ्रॉम होम जो माने वर्क फ्रॉम होम करूछन सेमान को भी इंटरनेट आवश्यक many government and private institute post their classes online so their students if unable to attend classes can learn and even teachers can teach from home टीचर्स मध्य कौन करि परिबे घरे थाई कि मध्य पढ़ेई परिबे तो ए सब कोन हला हमरो बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम हे पाला ट्यूटरिंग हे पाला ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स have increased because of internet which saves children time for traveling इन बस रे आसीबो पढ़िबो जिबो ए सब अपेक्षा तमे कोन कलो आराम से घर बसिलो सोइठी बसी क्लास कलो लेसन प्लान एंड सिस्टमैटिक टीचर्स कैन नाउ search teachers can now search in internet to know more about lesson plan खोला था नेटवर्क पर internet to know more about lesson plan as per subject and best practices of teaching हाँ तो ये सब जिनस मध्य systematically तम internet द्वारा ही जानि परछ रिसर्च करि परछ इंटरनेट आर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट सो थेसिस सो जहां भी कॉपी पेस्ट करछ ना नहीं तो असाइनमेंट थेसिस ए सब कोन यूज टू लोकेट स्टडी एड्स एंड एक्सेस रिसोर्सेस लाइक डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडिया ए सब थ्रू तमे मध्य रिसर्च पई
रेडी ही पारुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पीबीएल पिले 5 मार्क्स क्वेश्चन मस्ट पढुचे सब वर्ष वर्ष में आसीबो बेसलाइन तो एटा गोटे डायनेमिक अप्रोच देखो approach to teaching in which students get opportunity to develop knowledge and skills through engaging projects related to real world problems and challenges या द्वारा कौन है प्रोजेक्ट करबा द्वारा तुम रियल वर्ल्ड को फेस कल तमे एंगेज रहल तुमको तुमर थिंकिंग स्किल बढ़िला तुमर एंगेजमेंट कैपेसिटी बढ़िला तुम भितर कोलैबोरेटिव स्टडी बढ़िला कोलैबोरेशन हैला तो ये सब जिंस पीबीएल तुमको लाभान्वित करूची PBL is a teaching method in which students learn by actively engaging in real world and personally meaningful project विभिन्न प्रोजेक्ट तुमको असाइन करा होची तुम से प्रोजेक्ट पछरे लागि जाउछो PBL emphasizes on learning activities that are long term interdisciplinary student centered and integrated with real world uses issues and practices बुझिपाल तो ये कौन कर लंग टर्म जिन तुम मन रोचे स्टूडेंट गोटा कौन कर तांको भितर एटा पूरा माने विद्यार्थी केंद्रिक हो जाउची आ इंटीग्रेटेड हो जाउची रियल वर्ल्ड चैलेंज को ସେମାନେ फेस करि परछन्ती प्रैक्टिस करूछन्ती लर्निंग करूछन्ती और तांकर प्रैक्टिकलिटी मध्ये बढ़ुची इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फोकस इज मोर ऑन लर्नर asking questions and making changes to product and ideas based on individual and response to the education तो या द्वारा कौन होचे ना तुमरो बेसी लर्नर को ऊपर हमें फोकस करूचे देन लर्नर माने बेसी भलसे एठी कोन पार्टिसिपेट करूचंती टीचर कोन तुम खाली गाइड करला बट प्रोजेक्ट करला किए तमे करला तमने एंगेज हला तो एठी किए कोन कहिथिले सेडा अछि सेडा एते इंपोर्टेंट नुह एरिस्टोटल कोन कहिथिले सोक्रेटिस कोन कहिथिले याको तमे स्किप कर दे पारे ओडा के भी लेखंतिनी हैला रोल ऑफ टीचर तमे सिना प्रोजेक्ट करिवो बट टीचर रो रोल कोन प्रोजेक्ट रे फार्मिंग द लर्निंग से फार्म कला से तुमको बुझेला तुमको गाइड कला ହେଲା ତ तुमको आइडिया देला तो टीचर एठी कोन लर्निंग फार्म कला डिटरमाइन सक्सेस क्राइटेरिया तुम सक्सेस क्राइटेरिया मध्ये डिटरमाइन किए करिवो टीचर ही करिवो कारण से तुम फैसिलिटेटर देन असले डिस्क्रिप्टिव फीडबैक तुमको फीडबैक दोथबो ना एटा भूल कलो एटा ठीक कलो एटा एमती हला सेटा सेमती हला एटा आउथरे कर कोन दिन नहीं प्रोजेक्ट बार बार रिजेक्ट हुए तो नॉलेज डेवलपमेंट तुमरो नॉलेज बढ़े बसिए रिक्रूट एन ऑडियंस अलाउ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन मोटिवेट स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट मोटिवेट करबा काम हमर कंसल्टेशन एंड रिवीजन फ्लेक्सिबिलिटी peer feedback and self evaluations provide structure and support तुमको support तुम peer feedback ए सिस्टम रे फ्लेक्सिबल करेबा सब काम टीचर रो the steps in project based learning जदि तुमरे पीबीएल पढ़ला व्हाट इज पीबीएल तुम पीबीएल कोन लिखिबो पीबीएल ले तुम काम कोन लिखिबो पीबीएल ले टीचर काम कोन लिखिबो देन स्टेप पीबीएल ले कोन दरकार वे आगो कोन करबो तुम क्वेश्चंस आसीबो तुम मन को तो स्टार्ट्स विथ एसेंशियल क्वेश्चंस देन प्लान करबो प्लानिंग आसला डिजाइन ए प्लान फॉर प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट दिया हला प्लानिंग करबो किए को काम करबो कोठु केमती कोन जिंस आसीबो कोडा आगो करबा कोडा पछ करबा देन क्रिएट ए शेड्यूल गोटे शेड्यूल बनेबो मॉनिटर द स्टूडेंट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट मॉनिटर करेबो ए जिंस तू करबो से जिंस तू आनिबो तू ए काम तोर से काम ए सब असाइन करबो देन प्रोग्रेस करबो आगो को जिवो एक्सेस द आउटकम को चिन्हिबो इवैल्यूएट हबा लास्ट रे मूल्यांकन इवैल्यूएट करबो एक्सपीरियंस को स्टार्ट्स विथ द एसेंशियल क्वेश्चन से कथा बुझाला एसेंशियल क्वेश्चन केमती स्टार्ट करबो एसेंशियल क्वेश्चंस फ्रेम मोस्ट एंगेज स्टूडेंट्स को एंगेज करेला पीबीएल माने ही एंगेज हेले ही तुम प्रोजेक्ट गोटे करि परबो क्वेश्चन शुड बी ओपन एंडेड एंड रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड टॉपिक स्टूडेंट्स शुड बिलीव द क्वेश्चंस हैज एन इंपैक्ट ऑन मीनिंग ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ तांका लाइफ प्रति जेमते सेमते गोटे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट ही दिया आइथिबो जेमते पिलांका लाइफ को इंपैक्ट पकेबो ट्राई टू मेक इट इंटरडिसिप्लिनरी वो डिसिप्लिनरी वे रे इ सब काम हबो तो स्टार्ट्स विथ द एसेंशियल क्वेश्चन सरला देन प्लानिंग केमते करबो डिजाइन ए प्लान फॉर प्रोजेक्ट प्री प्लान कंटेंट स्टैंडर्ड्स निहाती भाबरे गोटे जिंस करिया पूर्व तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करो तो एठी भी प्लानिंग आवश्यक इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्लानिंग दे विल डेवलप ओनरशिप सिलेक्ट एक्टिविटी एंड कंटेंट as for curriculum know the materials and resources used by the students गोटे सब प्लानिंग हबो प्लानिंग प्लॉटिंग परे आसले शेड्यूल बनेबो
डिजाइन ए टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स एतिक दिन भितर एटा आसीबो एतिक दिन भितर हमें कामडा सारिबा सेट बेंचमार्क गिव डायरेक्शंस टू द स्टूडेंट्स पिला माननकु कहबो ए काम ए करबो से काम से करबो ए दर करि जिवो से ए काम एतिक समय भितर सारिबो तो डायरेक्शन पिला माननकु दिया जिवो रिमाइंड देम ऑफ द टाइमलाइन एंड डेडलाइन एतिक तारिख भितर हमको प्रोजेक्ट सबमिट करिवार अछि तो पिला माननकु टाइमलाइन और डेडलाइन विषय सूचना दिया जिवो initiate projects that will let all students meet with success सेमती सक्सेस रे हेबे सेति समस्या लागि पड़िबे monitor students and the progress of the project teach students how to work collaboratively and facilitate the process पिला मानकु सिखेबो मिली मिसि के केमती झगड़ा झाटी न हेई कि कामटा को सारिबा प्रोजेक्टटा सारिबा give freedom to choose their primary role and responsibility समानक responsibility तांको रोल से बने निजे फ्रीली जानिबा दरकार एनकरेज each child to give their best for completion of the project सरिबा पई पिला मानको एनकरेज करबो बूस्ट करबो कॉन्फिडेंस तांको बूस्ट करबो टीचर रा काम प्रोवाइड रिसोर्स एंड गाइडेंस पिला मानको उपयुक्त संबल देबो पिला मानको गाइडेंस देबो access the process by creating teams and project rubrics देखो तो जब प्रोजेक्ट हुए कि जहां तमर हुए कोटे कोटे ग्रुप हुए ग्रुप बी एम सब एक ग्रुप सी एमती के काम करे जे तो जो ग्रुप रे जे थिबो तांको कोन करबो तांको रुब्रिक्स दबो पोर्टफोलियो संग बने के दबो क्रिएटिंग तांको टीम क्रिएट करबो तांको मोटिवेट करबो ए काम भी टीचर ही करबो देन एक्सेस द आउटकम केमदी बाहला प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक पिला मनकर कोडी दोष दुर्बलता रहिला तांको आमे फीडबैक दोथुबा allow one to evaluate progress and relate that progress to others give students feedback on how well they understand the information पिला माने केते भले से बुझिले क्लैरिटी रहिले ना नाही ए सब जिंस मध्ये फीडबैक नउथुबो give opportunity to conduct self assessment by the students arrange a student teacher conference so that the students explain in detail their understanding गोटे कॉन्फ्रेंस करिवो जेंति पिला माने कोठी बुझिलेनी कोठी लाइकने रहला कोन हेलानी ए सब जिंस मध्ये पिला करिवे इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस सभा लास्ट रे मूल्यांकन करिवो रिफ्लेक्शन इज ए की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग शुड बी डन इंडिविजुअली एंड एज ए ग्रुप discuss the advantages disadvantages and needs of the project काई कले लाभ कौन होला क्षति कौन होला ये सब जिंस लास्ट रे मूल्यांकन करे जो सभा लास्ट रे इवैल्यूएशन हुए share ideas that will lead to new questions and new project एमती आइडिया शेयर करिवो जेमती कि न्यू प्रोजेक्ट पुणी आगो करिवो न्यू क्वेश्चंस ए सब जिंस को लीड करूथो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल रा टाइप कोन 3 टाइप थाए गोटे चैलेंज बेस्ड लर्निंग गोटे प्लेस बेस्ड लर्निंग आ गोटे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चैलेंज बेस्ड लर्निंग कोन ना पिले ताको कहा जाय भी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग Hello, the teaching method circles with its emphasis on student led solving and real world problem. Challenge ये हला एक काम कर हाँ the real world problems is लढ़िला it is multidisciplinary approaches to teaching and learning এটা ଗୋଟେ multidisciplinary approach children solve the real life problems through efforts on their home school and communities home घर को दिया जीवो टास्क स्कूल रे दिया गला कम्युनिटी रे दिया गला ए सब रे पिला माने रियल वर्ल्ड सहित लढ़िले स्टूडेंट्स बिल्ड स्किल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च एंड पोटेंशियली सोशल स्किल व्हाइल बीइंग एंगेज्ड इन लर्निंग तो सामाजिक ज्ञान तांकर बढ़िला सामाजिक कौशल तांकर बढ़िला एंगेज हेले से माने लर्निंग रे प्लेस बेस्ड लर्निंग कोन प्लेस बेस्ड एजुकेशन uses the local community including its culture and heritage landscapes and opportunities and experience to study across a range of subject तो ये हला प्लेस बेस्ड तो लोकल कम्युनिटी ए सब जिंस रे कल्चर बेस्ड में लर्निंग कला students benefits from inquiry based relevant learning that is personalized to the local communities local communities से जोड़ा हितिबो हाँ से गुडा को से माने सॉल्व करले place based education target the local community where students can address local issues like poor housing economics history geography of a particular region हाँ कोठी कोन प्रॉब्लम अछि कोठी कोन भौगोलिक त्रुटि अछि ए सब जिंस को से माने डिटेक्ट करके प्रोजेक्ट करिवे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये कौन एम्फोसिस देबो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थ्रू हैंड एंड एक्टिविटीज हाँ तमे हाथ को हाथ लगे कांधरे कांध मिसी कल प्रैक्टिकल ताको कहगला एक्टिविटी गोटे करिकी प्रैक्टिस कल स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू मैनिपुलेटिव्स एंड एक्सपेरिमेंट या माने तुम एक्सपेरिमेंट्स कल जिमते प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करूछो
प्रैक्टिकल क्लास गोटे रोचे तुम सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम गोटे रोचे एक्सपेरिमेंट वगैरह करूच सेल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग experience through practically engaging in activities such as independent investigation करके activity करके semane पहुंचीबे last रे in activity based learning children learn their own pace through various supportive activities. It allows for monitoring different aspects of students such as coordination, speech, motor skills, social skill ये सब तांकर बढ़िला मोटर स्किल केमती एक्टिविटी एक्टिव है एनगेज हेल गोटे जिनस कल हाथ कथ मिसे कमटे कल तुम मोटर स्किल ये एक्टिव है सोशल स्किल सामाजिक स्किल तुम बढ़िला सांग सांग मिसिकी कोलाबोरेटिव वे कल तो ये सब जिनस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रे गला तो ये गला पीबीएल गोटे 5 मार्क्स क्वेश्चन आसुची आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची एठाकर कोलाबोरेटिव लर्निंग कोलाबोरेशन माने कोन इंस्टाग्राम रे सब कोलाब ऐड करछो ना नहीं कोलाबोरेशन करछो त माने कोन मिसिकी छाडछो पोस्ट करूछो एठी कोलाबोरेटिव लर्निंग माने सेमती एकत्रित भाबरे एकत्र हेई पढिबो मिसिकी पढिबो कोलाबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स मिली मिसी एकत्रित हेई पढिलो वर्किंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कंप्लीट ए टास्क और क्रिएट ए प्रोजेक्ट हो गोटे टास्क हो गोटे क्वेश्चन हो गोटे जहां भी हो मिलित भाବରେ ସାରିଲ ତାକୁ କୁହାଗଲା collaborative learning according to ଜିସି କୋଖେଲ ଇ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ in collaborative learning the task is divided horizontally that is members of group work together more and less sequentially on different aspect of a project ମିଳିମିଶି ତମେ କାମଟା କରୁଛ collaborative way ରେ ତ collaborative learning involve ହୁଏ group goals as well as personal goal निज गोल सहित ग्रुप गोल मध्ये सैटिस्फाई हबो बिल्डिंग एंड रिलाइंग ऑन गुड रिलेशनशिप with others परस्पर परस्पर सहित भल भाव रहिबो contributing your ideas to the group of learning from one another परस्पर सहित तम आइडिया कंट्रीब्यूट करिवो भाबर आदान प्रदान करिवो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन एटा गोटे एक्टिव लर्निंग मिलिमिशि काम कलो ना मांदा हबर नहीं इन कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स assimilate the information and relate this new knowledge to a framework of prior knowledge पूर्व नॉलेज जहाँ भी थाउ ना कहीं मिलिमिशि कामटिए से माने शेष कले synthesize information it is challenging and opens the doors of learners to actively engage and to synthesize information rather than memorizing ମନେ ରଖିବାଟା ବେଟର ସେମାନେ କଣ କଲେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କଲେ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କର ମନେ ନ ରହୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ତ ମନେ ପକେଇଦବ ତ ଏଇ ସବୁରେ କଣ ବଢିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲାବୋରେସନ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଢିଲା ହଁ ତ ଡାଇଭର୍ସ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନର ଅଫ ଭ୍ୟାରିଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ come together hence leads to diverse viewpoint of different learners learning flourishes ମଧ୍ୟ ବଢିଲା collaborative learning gives an opportunity for intellectual discussion with which learner creates framework and meaning lead to learning हाँ the learning बढ़िला social and emotional well-being in collaborative learning learners are challenged socially and emotionally and are needed to circulate articulate and defend their ideas leading to development of new views points reading social construct सामाजिक बाद ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସାମାଜିକ वे ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ improve କଲେ well-being ବଢିଲା ତାଙ୍କର benefits କଣ ପିଲେ collaborative learning ର develops high level thinking skill ତମର thinking skill ବଢୁଛି promote student faculty interaction and familiarity ତମର faculty ମାନଙ୍କ ସହିତ interaction ବଢୁଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତମ ସହିତ interaction ବଢୁଛି increases students retention ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପଳଉଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗଲେନି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେନି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ build self esteem in student ପିଲାମାନଙ୍କର self esteem ମଧ୍ୟ ବଢିଲା enhances student satisfaction with the learning experience ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ତମମାନେ ଖୁସି ତ ତମ ଭିତରେ satisfaction ବଢିଲା promotes a positive attitude towards the subject matter ଉପରେ positive attitude ବଢିଲା develops oral communication skill କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତ oral communication ବଢିଲା develop social interaction skill ସାମାଜିକ interaction ମଧ୍ୟ ବଢିଲା promotes positive race relations positively ଗୋଟେ relation ତମର grow ହେଲା ୟା ଦ୍ୱାରା creates an environment of active involved exploratory learning हाँ ତମ exploratory learning बोलो ମାନେ explore କଲ actively participate କଲ ତ ଏଇ ଗୋଟେ environment ଏମିତି କଲା ତମର involvement ଯେମିତି ज्यादा ଥିଲା uses a team approach to problem solving while maintaining individual accountability
टीम अप्रोच बढ़िला, टीम स्पिरिट बढ़िला, एनकरेजेस डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग। हाँ सब जिनस जानिलो तमे। हाँ विविधता मध्य एकता बढ़िला। तो एनकरेजेस स्टूडेंट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर लर्निंग, पिला मानकर रिस्पांसिबल हेले। हाँ दायित्ववान हेले। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर alternate problem solutions in a safe environment, stimulates critical thinking and helps students clarity ideas through discussion and debate। discussion बढ़िला पिला मानक भितरे, सभा आला गोटे तो डिबेट तम भितरे पार्टिसिपेट कलो। हाँ ता द्वारा कोन क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ला, इनोवेशन बढ़िला। ओके एनहांसेस सेल्फ एंड मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट मध्ये करि पारलो। फिट्स इन वेल with the constructivist approach, establish an atmosphere of cooperation and helping in school. Students develop responsibility for each other, encourages alternate student assessment techniques, fosters and develop interpersonal relationship। interpersonal relationship madhya foster hela, grow hela, develop hela, enhance hela। students are taught how to criticize ideas, not people। आइडिया को क्रिटिसाइज कले, पीपल को नुह। पीपल कथा सुनिले, पिला पिला कथा सुनिला। sets high expectations for students and teacher, promotes higher achievement and class attendance बढ़िला। मिलीमिशि पाठ पढ़िबे तो हम सब attendance full रहइबो। students stay on task more and are less disruptive, बेसी disruptive हेलेनी। हाँ बेसी टास्क ऊपर फोकस देले। greater ability of students to view situations from others perspectives, creates a stronger social support system, creates a more positive attitude towards teachers, principals and other school personnel by students। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବ ବଢିଲା, relationship grow କଲା। addresses learning style differences among students, promotes innovation and teaching and classroom technique। innovation बढ़ला, खाली बसिलनी, बसिक मिलिमिଶିକି भाबिलो। से ता कथा सुनला, ये ता कथा सुनला, परस्पर ଭିତରେ भाव आदान प्रदान ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା critical thinking बढ़ला। क्लासरूम एंजाइटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। क्लासरूम जो एंजाइटी रोउथला मजे कोन करबी, एकुटिया केमती बसिबी, एकुटिया केमती आंसर देबी, मिलिमिशि पढला लोक तमर एंजाइटी मध्ये कमिला। हां टेस्ट एंजाइटी is significantly reduced, परीक्षार एंजाइटी मध्ये कमी गला। क्लासरूम resembles real life social and employment situations, students practice modeling social and work related roles, skill building and practice can be enhanced and made less tedious through collaborative learning activities in and out of the class। collaborative learning द्वारा एते सब फायदा तमरा हैला, मिलिमिशि पढ़िबा द्वारा। तो collaborative learning activities promote social and academic relationship beyond the classroom individual course। collaborative learning process create environment where students can practice building leadership skill। एते सारा advantages अछि, सेतरो 10 12 टी मन रखले मध्य काफी। एग्जाम पे 5 मार्क्स रो। it creates a community environment within the classroom, engage in subject specific discussion with peer माने तुम स्टूडेंट भितरे तमरा subject specific discussion बढ़िला। assimilate multiple views to deepen knowledge पढ़ला। foster individual accountability to the team, develop independent learning strategy, it helps to retain information longer, बहुत ज्यादा तक मन रखी पाला जिनसटा। enhance self management skill और लर्नर आइसोलेशन मध्य मिटिगेट्स ହେଲା या द्वारा। तमे एकुटिया नुह, मिलिमिशि के अछ, भाई भाई हेके अछ, तो तम मानकर अटेंडेंस मध्य बढ़िला। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग कोन, एस्टैब्लिश ग्रुप गोल। ग्रुप गोल गोटे रहइबो, गोल एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड at the beginning of the task। अगर टास्क आरंभ पूर्व तुम गोल कोन, केजरा पिला को काम करिवो से सब आगे एस्टैब्लिश हुए। फ्रॉम मिडिल साइज ग्रुप ऑफ केते हम कोन मेंचे ग्रुप करबा कि मेंचे पिला नबानी, 4 to 5 टा पिला नबा। 4 to 5 members is optimum। if number is high then some might escape participation and if number is low lacks diversity कमी गला। establish flexible groups norms, interactivity and group learning and important in group learning and for this group norms should be flexible। build trust and promote open communication बढ़िला। successful interpersonal communication should exist in group, immediate measures should be taken for any interpersonal and emotional issue। create different roles for larger task माने पे different role रहला। if task is difficult create different roles for students like group leader, recorder, reported एरो सब करि परिबो। जदि बेसी माने larger task रहला गोटे तीन भाग करि परिबो, ये लीडर हला, ये रिकॉर्डर हला, ये रिपोर्ट सब लिखिबो,
ଏଇ ଜିନିଷ ଭାଗ କରିପାରିବ ତମ ଭିତରେ। Administration of pre-test and post-test for learning by all member of pre-test ଆଉ post-test should be administered। ହଁ pre-test ରେ କଣ ହେଲା, post-test ରେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। Learning processes assessment grade students on basis of quality of discussion, engagement and adherence of group norms। Reduce anxiety ତମର କମିଲା ୟା ଦ୍ୱାରା। Establish ହେଲା group interaction, quality of discussion ବଢିଲା, indicates ଇଏ କଣ କରେ, success in a group। Teacher should start initial discussion, clarify doubts, summarize the project, give challenging questions, provide information, help in maintaining harmony and emotional well-being of the learner। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢିଲା, ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ ବି ତମର ସମ୍ମାନ ବଢିଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲା ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବଢିଲା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା। ତ ଏତିକି ତମର ଥିଲା ୟୁନିଟ 4 ର ପାଠ। ଏଥିରୁ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପିଲେ କହି ରଖୁଛି ପିବିଏଲ ଆଉ କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଇସିଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ଏଜୁକେସନରେ କଣ ଲାଭ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲି ୟାର। କଣ କଣ, ଗୋଟେ କହିଲି ତମକୁ ପିବିଏଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ତମକୁ କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ତମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆଇସିଟି ର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏତିକିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବ। ହଁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେୟାର ହବ ସୁଭସ୍ମିତା, ଟେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ନିଅନି। ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ତୁମେ ସବୁ ପଢ, ଆଗ ପଢ ତାପରେ ସିଲେକ୍ସନ ଖୋଜିବ। ଆଗ ସିଲେକ୍ସନ ଖୋଜିକି ଗଲେ ଯଦି ସେଗୁଡା ନ ପଢିଲା, ସବୁ ଯାକ ପଢିଥିଲେ କଣ ଯାହା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ, ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ଗୁଡା ପଢିଲେ ଲେଖିପାରିବନି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ହୁଏନି ବାବା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ରୁ ଆସେ, ୟୁନିଟ୍ 4 and 5 ରୁ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସେ। ୟୁନିଟ୍ 4 5 ରୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବ। ନା 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 ୟୁନିଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ ରେ ଯିବ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାହାବି ଚୁଡ଼ିଦାର ଜିନ୍ସ କୁର୍ତ୍ତି ଯାହାବି ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତମର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେ ଯିବନି, ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ଏସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ପିଲେ ଯିବା। ଆଉ କଣ କହିବା, ଏଥିରେ ତ ଖାଲି ଗପ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିବାର ପାଠ ଖାଲି ଏତିକି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଜାଣିଲ କେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ। କୋଲାବରେଟିଭ ସେମିତି ଖାଲି ଘୋଷା ପାଠ, ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ରେ ମା। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ୟୁନିଟ୍ 5 ଟା କାଲି ସାରିବା, ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କିଛିଟା ଦେଖିବା। ହଁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା, ଡାଇଗ୍ରାମ କେମିତି କରିବ କହିଦେବି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ୱେଲକମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।